Good morning, dear students. Today we see a synopsis the Swiss family Robinson. Okay, this is the novel and written by a famous Swiss clergyman Johann David Bass. So synopsis means theme, not whole story of the novels. So there are given some important part in this story. The Swiss family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It has also been made into graphic novel and films. Look here, means how it is important, isn't it? The present novel related the Swiss family, Robinson's families, and is well known. Robinson family is very known for their adventures, and so that's why this novel composed on their heroic deeds. Many peoples of countries have enjoyed for more than 200 years, means it is very interesting novel, so that's why it has been reading more than 200 years. दुनिया में जब से वो लिखी गई है तब से वो क्या है 200 हो गए, लेकिन उसकी जो रीडिंग की पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुई है. इट हैज़ आल्सो बीन मेड इनटू graphic novels and films, so it is very popular. Why? Because many pictures, many graphics novels and films also based on these novels. Let's start next paragraph. The novel, written by the Swiss clergyman Johann David Wass, is not just an adventure. It aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperations, and prudent use of resources. It also has good lessons relevant in natural science, good husbandry, and even mathematics. Okay, so द नॉवेल के जो राइटर्स हैं वो क्या है, स्विस क्लर्कीमैन जोहान डेविड वैस. इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर. वो सिर्फ साहसी बातें, साहसी वर्क या हीरोइक डीड्स वो प्रेजेंट नहीं करते थे. क्या करते थे, उनका जो एम है, उनका एम क्या है, इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस. जो आत्मनिर्भरता की जो वैल्यू है वो पढ़ाना है. डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली. यस, लव फॉर योर फैमिली. हम आजकल देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, हमारे फैमिली के प्रति उतने डिटरमाइंड नहीं रहते, कोऑपरेशन भी नहीं रहता उसमें. दे आर नॉट कोऑपरेटेड एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्स. It also has good lessons relevant in natural science, good husbandry, and even mathematics. Means Johann David Wass, he want to give the lessons, he want to teach the persons good lessons relevant in natural science and good husbandry. Husbandry means yes, and even mathematics. Means he want to make versatile characters of young people. Next paragraph. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Given below is a synopsis and outline of its basic story. क्या है? Yes, means novel. What is the definition of novel? Novel which is written on the imaginations. It is based on our imaginary things. So, but we must consider that it is a work of fiction and not of a fact file. So that's why means all the story, all the incident, it is not as it is.
So we must consider that it is work of fiction and not of a fact file. Given below is a synopsis and outline of its basic story. So that's why it is impossible to write the whole story of the Swiss Family Robinson. So there are given outlines. Outlines means there are given only theme. Next paragraph we see William Elizabeth and their children had been traveling in a ship. When the ship was caught in a great storm, the other passengers evacuated without them. William and his family, including the young children, Fritz, Ernest, Jack, and Franz, were left to survive alone. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. The ship survived the night, and the family found themselves with sight of a tropical desert island. Here, what happened in this story? Williams is the head of the family, and Elizabeth, both they were husband and wife, and their children had been traveling in a ship. वो क्या कर रहे हैं? उनकी जो फैमिली है, विलियम की फैमिली, वो फैमिली के साथ शिप में ट्रैवल कर रहे हैं. एंड व्हेन द शिप वाज कॉट इन ए ग्रेट स्टॉर्म, उस समय while they were traveling in the ship, their ship was caught in a great storm. एक भयानक तूफान में उसका जहाज फंस गया था. The other passengers evacuated without them, और बाकी के जो दूसरे पैसेंजर्स थे, को पैसेंजर्स वॉयजर्स, वो क्या किया? उनको छोड़कर वो चले गए. विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फ्रीज, विलियम और उसकी जो फैमिली है, उनके छोटे छोटे बच्चों में से कौन कौन थे? फ्रीज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांज वेर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन. अपने खुद पर, अपने आप पर वो जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया. दे वेदर द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड. The ship survived the night, and the family found themselves within sight of a tropical desert island the next morning. Puri means all the nights they were facing the great storm, and at last they reached tropical desert island. नेक्स्ट मॉर्निंग जब दूसरी सुबह जब वो देखते हैं तो उनका जहाज़ कहाँ छुपाया था, मतलब कहाँ उनको मिला? जैसे उनका जहाज़ एक ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय डेजर्ट आइलैंड के पास उनका जहाज़ उनको देखा कि दे डिसाइडेड टू गेट द आइलैंड द कूल्ड सी बियॉन्ड द रिव. उन्होंने ठान लिया, गेट टू द आइलैंड, वो आइलैंड पर, वो जो डेजर्ट आइलैंड था, वो डेजर्ट आइलैंड के अरे वो चले गए, मतलब वहाँ जहाज से उतर गए. और विथ मच इफोर्ट दे कंस्ट्रक्टेड ए वेसल आउट ऑफ टब. अब सो दैट्स वाई विथ मच इफोर्ट मीन्स बहुत परिश्रम के बाद, बहुत परिश्रम के साथ उन्होंने क्या बनाया थे? कंस्ट्रक्टेड ए वेसल्स आउट ऑफ टब. कंस्ट्रक्टेड ए वेसल मीन्स बोट आउट ऑफ टब. उनके पास जो कुछ टब थे, वो टब से उन्होंने क्या बनाया? वेसल्स बनाया. They made the vessels boat. After they filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value, they could safely carry. क्या किया? After they filled the tubs, yes, वो उसने जो वेसल बनाया था, टब बनाया था, उसमें क्या किया उन्होंने? जो नेसेसरी चीजें थी, मीन्स they put all the important things which are necessary for their life, to survive their life. So that's why after they fill the tub with food and ammunition and all other articles of value, ये जितने भी मूल्यवान चीज़ें थी, खाने पीने की चीज़ें थी, वो क्या उसको सही सुरक्षित तरीके से वो कैरी कर सकें. They rode toward the island. After that they rode toward, means they traveled, they started their traveling toward the island. वो आइलैंड के बेट पर, वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर वो पहुंच गए. Two dogs from the ships named Turk and Juno swam beside them. The ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry
tools, books, a disassembled finance and provisions had also survived. Yes, they they started their travel toward the island, and along with them there were two dogs from the ship's name, and their names Turk and Juno sat beside them. उनके साथ में क्या कर रहे थे? Yes, they were not seated in the boat, so that's why they were stand beside them. The ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry, tools, books, a disassembled finance and provisions had also survived. तो जो कुछ जहाज में कुछ अच्छी चीज़ें थी जो विच वेयर वेरी यूजफुल, दे वेर एज इट इज देयर. ओवर द नेक्स्ट 2 days, William father attached the portable old kegs to one another and built a bow that curved around them. The family had landed successfully on the island. क्या होता है? ओवर द नेक्स्ट 2 days, कुछ दिनों तक क्या किया विलियम फादर? ओवर द नेक्स्ट 2 days मीन्स आगे के कुछ दिनों में उन्होंने क्या किया? विलियम्स अटैच द पोर्टेबल ओल्ड केक्स. ओल्ड केक्स मीन्स यस फ्लोटेबल मीन्स हल्के जे विच कॅन फ्लोटेबल मीन्स यस म्हणजे जे वाहून जाऊ शकतात, हलके असू शकतात, जे डुबू शकत नाही. दे कुल नॉट संक इन टू द वॉटर. सो लाईक दिस ओल्ड केक म्हणजे पुराने जो आपण वी कॅन से दैट पॉट केक्स टू वन अनादर एंड बिल्ट ए बो. और क्या बनाए? जो पुराने उसके जो केक थे मीन्स पिंपे जो पॉट्स थे उनका उस पॉट से क्या बनाए उन्होंने? बोट बनाए. बिल्ट ए बो दैट कर्व अराउंड हिम. क्या? केक टू वन अनदर एंड बिल्ट ए बो. एक कमान बनाई उसने दैट कर्व अराउंड हिम. द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड. और इस तरह से फैमिली जो दूसरे आइलैंड पर पहुंच गई. उन्होंने बोट बनाई सुरक्षित जाने के लिए, बिकॉज दैट शिप इज नॉट in well condition, so that's why he made floatable boats. They set up a tent and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. They set up a tent. क्या किया? रहने के लिए तो कुछ घर में चाहिए, so that's why they made the tent on that island and softened the floor with armload of grass. और जो नीचे का जो फ्लोर्स है सोने के लिए क्या बनाया? यस, सोने के लिए बनाया एक अच्छी तरह का सॉफ्ट वाला उन्होंने बेड बनाया. दे बेड मीन्स यस द फ्लोर्स सॉफ्टन द फ्लोर्स विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास. दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स. मीन्स दे कट द ग्रास एंड दे स्प्रेड ऑन द फ्लोर एंड दे मेक देयर बेड्स. दे मेक देयर मैट्रेस cushions, we can say that. They came to a grove of trees. Means yes, now they reach grove of trees. अच्छे एक झाड़ी में पहुंच गए जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, वो उसी जगह आ गए. ऑन ट्रीज ग्रू दैट लुक लाइक गार्ड्स ऑन इट्स. लुक हियर, दिस इज द पिक्चर. हाउ मीन्स दे मेक सच टाइप ऑफ बोट्स. उनकी जो फैमिली थी वो इस तरह से उन्होंने बनाई. ओके. द फादर टोल्ड प्रीज द गार्ड्स विल मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून. द फादर टोल्ड प्रीज, जो विलियम्स उनका जो बड़ा बेटा था प्रीज, उसको क्या कहा? द गार्ड्स विल मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून. वो गार्ड से है जो पेड़ के ऊपर लटका था, गॉड से वो क्या बना सकता है? मेक एक्सलेंट बाउल एंड स्पून. बाउल्स मीन्स यस कटोरी, वी कैन से दैट बाउल्स एंड स्पून्स लाइक, एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स. यस, मीन्स प्रीज इज वेरी टैलेंटेड बॉय, सो दैट्स व्हाई ही
tried to help his father and his family members. So that's why he can make excellent bowl and spoon with the help of that guards. And they and he can make various utensil means अलग अलग प्रकार के जो यूजफुल ऐसे जो वेपन्स हैं, यूजफुल थिंग्स हैं, टूल्स हैं, वो बनाने के लिए कार्ड्स का वो इस्तेमाल कर सकता था. Then next paragraph. After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. After some days, while they were living on that island, Pre's mother, what is the name of Pre's mother? Elizabeth. Elizabeth, she realized that that island was not suitable to live with her family. So that's why she informed to Williams, and she informed to Williams and she wanted the family to move to a safer place. वो उसकी जो फैमिली है एक सुरक्षित जगह पर वो ले जाना चाहती थी. Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. उनका जो आइलैंड पे जो उन्होंने जो टेंट निर्माण किया था, it was not safe for their family. So that's why means that current camp was not only exposed but also very dry and hot. That island is very dry and hot, so that's why she wanted to move in a safer place. If they built a house up in one of the large trees and then वो एक आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आती है, वो क्या करती है, if they built a house up one of the large trees, उनका जो टेंट था पहले क्या पेड़ों के पास ही था ना. सो दैट्स वाई वो इसके मन में एक आइडिया आती है और बोलती है इफ दे बिल्ड ए हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्री, अगर वो अपना घर कहाँ एक आधे बड़े ट्रीज के ऊपर बनाएंगे तो दे विल बी सेफ फ्रॉम जैकल्स. सो आवर फैमिली विल बी सेफ फ्रॉम जैकल्स एंड अदर्स वाइल्ड एनिमल्स. हमारी जो फैमिली है वो सुरक्षित रह सकती है जैकल्स से और दूसरे भी वाइल्ड एनिमल्स से. She described a perfect tree for the project on one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. Look here, क्या होता है, one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. Look here. And she describes such vertical place. She describes such vertical trees to make their house, make their house. And she described a perfect tree for the project. One whose trunk was nearly 40 feet in a diameter. जिसकी जो ट्रंक है, ट्रंक यू नो वेरी वेल, ट्रीज का जो ट्रंक रहता है उसका जो ट्रंक कितना बड़ा है, nearly 40 feet in diameter. 40 feet in diameter. The branches were very long and extended straight out from the trunk. उसके जो branches है, branches also very long and extended straight out from the trunk. trunk से उसके जो कुछ branches भी है वो बहुत दूर तक फैले हुए थे, making them perfect platform for a structure. And so that's why, and ब्रांचेस उसके बहुत दूर तक फैले होने के कारण वो परफेक्ट प्लेटफॉर्म उस जगह पर वो बना सकते थे. लेटर व्हेन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस, व्हेन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, जो नीचे की जो लोवेस्ट ब्रांचेस है उसको कैसे, उसकी हाइट कैसे क्या मापी जाती है, डिटरमाइन कैसे क्या निश्चित की जाएगी, हाइट of the lowest branches. The father taught the boy geometry and how to use triangles to measure big objects. Look here, means yes, means fathers, William father and Elizabeth, they did not teach them only adventures. They did not teach them only how to love their family, but also he tried to teach, he
wanted to make their children as a versatile children. So that's why Williams and Elizabeth taught them some geometrical figures, triangles, then how to take the measures of big object. He measured a defined distance from the trunk. Then he calculated angles using several measures rule. Then after that, after teaching, he tried to make calculate angles using several measures rod, determining that the lowest he measured it